said that she watched Jaffa and she thought that her situation was too similar, and now she's opened up to her family and she's left her husband. And then I, of course, obviously replied to the person as well, because आपको लगता है कि आपका educational role play हुआ है project का, but it's also very painful to know that someone's going through so much pain. So I think this and a few other instances where women said that, you know, they could feel or they have felt what I just went through. बेस्ट एक्ट्रेस जीतना, वो ट्रॉफी जब आई आपके हाथ में, आपका नाम अनाउंस हुआ फाइनली, मावरा हुसैन, वो क्या मोमेंट थी इतने सालों जिसका आपने इंतजार किया, जरा वो बताएं। उस वक्त दिमाग में ये लग रहा था कि मिल जाएगा इस बार, या इस बार भी था कि नहीं यार? नहीं बिल्कुल भी नहीं. It was also your birthday. It was also my birthday. Yes. Birthday and award, माशाल्लाह, big moment. I think वल्ला मियां ने कहा कि बस this is the right moment, इसकी birthday वाले दिन you nominated, I give her the award. पहले बर्थडे की नॉमिनेशन थी ना, पहली बार बर्थडे वाले दिन था. हाँ, ये इनको मेरी बर्थडे पे अवार्ड्स नहीं रखने चाहिए. मैं मुझे हर साल मिल जाएगा फिर, क्योंकि मेरी बर्थडे हमेशा मेरे लिए बहुत वो रही हैं, ब्यूटीफुल रही हैं. तो ये तो साबित हो गया इस दफा. What's next? What's next? I'm reading a Kashif Anwar script. अच्छा. Yes. Again? Yes. But other than that, anything in the pipeline that you've shot or that you're shooting currently or that we'll get to see of sooner? I am actually doing another project with Adnan Sarwar. Okay. Yes. Which I am supposed to shoot, inshallah. Start shooting this month. Inshallah. Yes. Inshallah. And ये सारे heavy watches हैं या कोई light, नहीं, कोई rom-com types? पता है मैं उनको बिल्कुल भी टैग नहीं कर सकती. कभी-कभी शुरू कहीं और से करते हैं और वो collaborative process में बात कहीं और निकल जाती है. But अभी क्योंकि दोनों projects बिल्कुल ही primary stage पर हैं, so I can't really. But आपने मोमना दुरैत का जिक्र किया और आपने कहा कि आपने उनको बताया कि मैंने लाइट हार्टेड करना है, उन्होंने कहा जफा के बाद कर लेना. हाँ. तो ये रमजान ड्रामे हमारे बनते हैं, इस तरह की चीज नहीं कोई आई आपके पास कि यार अच्छा ठीक है मैं कर लेती हूँ, या आपने सोचा होगा यार मुझे दे दें रमजान ड्रामा, आई वांट टू डू समथिंग लेस सीरियस एंड लाइक यू नो लेस. अच्छा पता है, I have a rule which is if I'm not doing a project, I will not ever speak about it. So whatever projects been offered to me and I have not picked them, I can't say what projects they were and whether they were ना light करते or not. आपने कह दिया सब. नहीं ना Hassan, please don't get me in trouble. No, but are you open to the idea of No, doing absolutely. like a रमजान ड्रामा, और क्या आपने अब फैसला कर लिया नहीं मैंने करना ही नहीं है? नहीं ऐसा कोई फैसला नहीं किया. You know Hassan, I can never decide what's next and I can never say never, because जब आपके पास कोई अच्छा content आता है ना, आप शुक्र अदा करते हैं. आप कहते हैं कि बस ये मुझे you know I'm just gonna latch on to it. तो वो तो चाहे वो फिर किसी भी वक्त चलना हो, किसी भी चैनल पे चलना हो, कुछ भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म उसका जो भी हो, it doesn't matter. Last time Mohabbat was sort of a Ramzan. Yeah, it was. It was supposed to be. It was supposed to run in Ramzan, but I think they ran. What went late wrong on there? it. Since you were so honest about that. Yeah, I think I did not. It wasn't what I thought it would be. Let's just say that sometimes I can make a mistake in judgment. So I think that what we set out to make, we couldn't make it. Deliver नहीं कर सकते. हाँ, वो किस वजह से नहीं हो पाया? Like I said, there's so many people. You know how a successful project is a teamwork? So is a failure. You don't know at which stage you failed. No, it's true. You don't know at what stage you failed. Whether I failed as an actor, whether you know something else failed. You can never pinpoint it. And even if I would, I wouldn't tell you. But कितनी अच्छी बात, because they say ना success has many fathers, failure has none. Yeah. But you saying it's good coming from you. You saying कि यार सबका. No. Every time a project of mine has failed and has not done well, I don't like to especially I don't like to put the blame on anyone else. If I can, I would love. तो वहाँ पे collaborative process भी नहीं चला. नहीं collaborative process कभी-कभी नहीं work करते. आप काम तो मिलके ही करते हो और मेहनत मैंने उतनी की है और घंटे मैंने उतने ही लगाए हैं. लेकिन अगर वो चीज़ नहीं ऑडियंस के साथ रेजोनेट की तो वो नहीं की, क्योंकि ऑडियंस आपकी फाइनल जज है. ऑडियंस ने बोल दिया बुरा है तो फिर बुरा है. यू कैन नॉट सिट एंड जस्टिफाई कि नहीं मेहनत की थी तो क्यों नहीं देखा, मेक समथिंग बेटर. सो दैट्स व्हाट आई थिंक कि अगर कोई चीज़ मेरी फेल हो गई है, you know, move on to the next project, work harder. Since आपके collaborative process का success rate अच्छा है, ज़्यादा है, माशाल्लाह. इंटरव्यू के बाद अगर गड़बड़ नहीं अल्लाह ना करे. माशाल्लाह. कभी आपने सोचा कि खुद लिखें कुछ,
खुद डायरेक्ट करें, खुद बनाएं, खुद प्रोड्यूस करें? मुझे ऐसा लगता है कि at some point I will. You will. I would like to direct at some point. I would also like to write, but I think that writer's job is the hardest job. I'm not saying कि director का काम आसान है, but I'm on set all the time. मैंने जितने directors के साथ काम किया, आप एक तरह से समझें कि मैं उनकी assistant हूँ. I've been learning with them. Writer's job, I think it is insanely hard to start from nothing. Zero से खाली सफ़े से start करते हैं वो लोग और पूरी पूरी कहानी बना देते हैं. So it is very fascinating for me and I would love to write someday, but I don't think it's possible. ये भी चेंज है आपकी पर्सनालिटी में. Earlier you would say कि direct write नहीं, I'm a star, I come on set and बस I यही है. never said I'm a star. No, I've man, never not in that sense, but in the sense that you know this is their job. I'm an actor and I want to act. ऐसे कहती थी मैं. हाँ. अच्छा. देखो अब याद भी नहीं है पुरानी बातें. ये हो गया. वो कोई और मामला थी. मुझे I cannot remember क्या कहती रहती थी. कुछ भी कहती थी वो तो वैसे honestly. फिल्मों का क्या सीन है? एक point पे you were doing films and then. No, I just did 2 movies. हाँ, so like yeah, that's what I'm there's saying. not been a point where I've done movies, but just 2, one in India. But and at one that time you said no, you were also in talks and you were. हाँ जी, pre-COVID actually movies बन बहुत ज़्यादा रही थी. और आप काफी सारी कर रही थी फिल्में. हाँ, I was working on I think 3 projects और वो उनमें से एक तो बना नहीं और वो 2 जो मैंने जो मैं करना चाह रही थी वो again while we were in that process of understanding it didn't quite work out for me, and I also feel really pulled towards good content more than like film larger than life होती है. उसमें of course उसमें भी content होता बहुत important है. If I may say so, I feel that our strength is dramas. It is. Yeah, so I like to work on dramas a lot more than like I've read movies in the past few years as well. But it's not a discrimination I do between specifically movies and dramas. It's what I'm reading. Is it really pulling me towards, the story? So that has not happened for me. But you're still open to doing movies? Absolutely. In fact, I want to say that I'm very much open to even doing some, brainless projects like I was going to ask comedy you. or. Not that के वो लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं, but why do we always see you on Hum TV only? You've not done ARY recently. You've not done Jio. It's not a conscious decision. I read scripts from all channels, and it just so happens कि पहले मैंने previously I worked a lot with ARY and Jio. Yeah. तब मैं एक साल में 7 प्रोजेक्ट करती थी. अब मैं मुश्किल से 1.5 प्रोजेक्ट कर पाती हूँ एक साल में, क्योंकि अब प्रोजेक्ट्स को बनने में भी वक्त ज़्यादा लगता है. There's a lot more time and money invested in one serial as opposed to say 5 years ago. So I think once I sign one project, I find it very hard to jump to another. And I think that kind of sometimes restricts me dates-wise and sometimes... But you're only picking these scripts, na? No, it's because of the content I'm reading. If I like something from any channel, like I said, कंटेंट के लिए मैटर ही नहीं करता चैनल क्या है, मीडियम क्या है, एक्टर्स कौन है आपके साथ. मेरे लिए जो 2 चीज़ें मैटर करती है ना, वो कि मेरी कि लिखने वाले कौन है और डायरेक्ट कौन है. और आपका वो रूल भी है ना कि अगर आपने नहीं किया प्रोजेक्ट तो आप नहीं नाम लेंगे उसका. हाँ. तो मुझे तो पता है कुछ प्रोजेक्ट्स. आपको सब पता है. हाँ. कुछ प्रोजेक्ट्स मुझे पता है जो इधर उधर से आपके पास आए. वावरा, थैंक यू सो मच. बहुत मुश्किल इंटरव्यू था. क्यों? मैंने तो कोई मुश्किल सवाल ही नहीं पूछा आपसे. मैंने कहा अभी आसान सवाल आएंगे, अभी आएंगे. क्या आसान सवाल करूं? नहीं आपकी जिंदगी में एक नया नो यू कैन रैप इट अप इंक्लूजन हुई. आपकी जिंदगी में एक बहुत खूबसूरत एडिशन हुआ. आपकी नीस आई. तो अपनी नीस के बारे में बताएं, कुछ आरा के बारे में हमें. आई थिंक शी इज द बेस्ट थिंग अबाउट माई लाइफ. लाइक शी हैज ब्रॉट सो मच हैप्पीनेस इनटू आवर लाइव्स. It's not something we thought we can experience. Whether it's the best feeling. Being a khala is obviously, it's a new role that you've taken on. And mashallah, you babysit her a lot as well. I love it. Yes, it's my favorite job in the world. Any more jobs incoming in your life? No. Okay. These 2 jobs are enough. Babysitting and acting. No, but tell me, you were a lawyer. What happened to that? I cannot... pursue my degree, unfortunately. मैं
5 साल पहले बहुत ओवर एम्बिशियस थी मुझे लगता था दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बट आई थिंक टू बी एबल टू